Welcome to agpgstudy. लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल Comprehensive Communication Skills in English. So let's start. In this video, I share you experiment third and fourth, but I have already shared experiment first and second in the previous video, so you can check them in the playlist. Well, let's start. Experiment 3. Objective syllable and syllabification. Syllable. Syllable are the phonological building blocks of word. There is at least one syllable in word whenever. A syllable consists of one vowel sound. Syllable में one vowel sound होते हैं and two or more consonant sound से एक unit बनती है. To understand this, look at the word below example. Go, one syllable. And two syllable is table, is t and bull. तो दो sounds निकलने हैं इसमें, तो ये two syllable है. And the second example is auditor. ऑडिटर, तो इसमें तीन साउंड्स निकल रहे हैं, तो ये थ्री सिलेबल है. वेयर सो इसमें सिलेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए सिंबल सी का यूज़ कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड वी का यूज़ कर रहे हैं वाउ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए. एग्जाम्पल बुक, इट हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CVC, मीन्स बी है कॉन्सोनेंट एंड ओ है वाउल एंड के है कॉन्सोनेंट. So this is book. Types of syllable in English. Type 1 V I A. Type 2 V C A and at. And vowel just like example no. And second go. And type 4 consonant vowel consonant cat but. Type 5 consonant vowel try grow. And second type 6 spray triple C and V is spray. And type 7 spread, type 8 spread. Syllabification. The number of vowel sounds generally indicate the number of syllable. In a words, let us take a look at the different type of syllable in different words. Monosyllabic. अगर एक वर्ड में वन सिलेबल है तो उसको मोनोसिलेबिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हट. डाइसिलेबिक मीन्स टू सिलेबल्स हैं एक वर्ड में तो उसको डाई बोलेंगे. टीचर टीचर. एंड ट्राइसिलेबिक मीन्स एक वर्ड में थ्री सिलेबल है तो उसको ट्राइसिलेबिक. फॉर एग्जाम्पल प्यूरिटी प्योरिटी. एक्सपेरिमेंट 4. ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. वर्ड स्ट्रेस. Word accent in phonetics. Accent I stress means expanding extra breath on a particular syllable in a word. किसी भी वर्ड में हम जब स्ट्रेस करते हैं तो उसका वर्ड एक्सेंट. फोनेटिक्स में जब हम किसी वर्ड को एक्स्ट्रा ब्रेथ से एक्सपेंड करते हैं, उस पर स्ट्रेस डालते हैं एक वर्ड के सिलेबल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक आवर स्पीच इंटेलिजिबल. द मार्क ऑन द टॉप ऑफ द सिलेबल in a word indicates that particular syllables is stressed. ठीक है, जो टॉप ऑफ मार्क है सिलेबल का, ये फोकस करता है कि ये शो करता है द मार्क. This is mark on the top of syllable in a word indicates that particular syllable is stressed. And one thing is उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रीसेंट, so
So it is the as a noun, it is the meaning of gift. And if we say present means to show something. And one more other example is word is record. Re noun, it is a mean of to have evidence in past, and this record record means to have something digitally record. So इस सेंटेंस में हम ये बताएंगे द पावर ऑफ स्ट्रेसिंग वर्ड. सो दिस इज एग्जांपल, सी सोल्ड द कार टुडे. सो अगर हम इस पे पर्सन पे फोकस करेंगे देन इसको ऐसे बोलेंगे, शी सोल्ड द कार टुडे. एंड देन अगर हम एक्शन पे फोकस करेंगे, सी सोल्ड द कार टुडे. एंड देन अगर हम ये फोकस करेंगे कि वो क्या बेच रही है, देन वी फोकस ऑन सी सोल्ड द car today. And if we focus on time, then she sold the car today. Please stress vowels, not consonant. Functional shift of stress. So there are a number of words, two syllable, in which the actual pattern depend upon whether the word is adjective हो चाहे verb हो. जब word as a noun यूज करेंगे तो हमेशा उसके वर्ड के सेकंड सिलेबल पे फोकस करेंगे, स्ट्रेस करेंगे. फॉर एग्जांपल absent, object, subject. वर्ड स्ट्रेस के तो फर्स्ट पॉइंट इज अगर वर्ड डायसिलेबिक है विथ वीक प्रीफिक्स द स्ट्रेस इज ऑन द रूट. फॉर एग्जांपल above, across. एंड सेकंड पॉइंट, इन डायसिलेबिक नाउन और एडजेक्टिव, वर्ड नाउन हो या एडजेक्टिव हो, द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस. फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होगा. फॉर एग्जांपल कैंपस, फैक्टर. In disyllabic word, the second syllable is stressed. Perform, refuse. Compound noun है और combination है noun और another noun का या adjective और noun का, तो उसमें हम फर्स्ट उसके फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेस करेंगे. फॉर एग्जांपल ग्लास हाउस, palm top, pine point. Noun word is an adjective or a combination of an adjective and past participle of a verb. The last part is stressed. For example, clear-headed, outbound. And sixth point is अगर turn off, break down. Word अगर compound word verb है और combination है preposition verb का, तो उसमें हम last part में stress करेंगे. For example, overpower, understand. Word ending in a derivational suffix such as IO, ICL, ICALLY and this are. अगर इन सब सफिक्स में अगर एंड कर रहा है, have stress on the syllable preceding the suffix. For chaotic, pathetic, energetic. Word अगर word ending with शन, CIN and IUN have stress on the paniculate last but one syllable. Just acidify. Technology. Word ending with this letters have accent on the third syllable. Geometry. Ending with meter have the stress on the last syllable. Thermometer, speedometer. Inflectional suffix SES, DED, ING and derivational suffix these are don't do not normally affect the stress pattern. Term, bus, buses, child.
And compound words are two different words. When pronounced individually, stress is on the both words, but when put together, then meaning changes and does the stress pattern. Green fly, a fly green in color. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.